वेलकम टू QTech चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फायर सेफ्टी सिग्निफिकेंस और फायर वॉच इंटरव्यू। हमारी वीडियो 2 पार्ट्स पे कंसीडर करेगी। इंशाल्लाह जब आप ये 2 वीडियोस देख लेंगे तो आप अपना फायर वॉच का इंटरव्यू जो है वो आप इजीली क्लियर कर सकेंगे। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ फायर वॉचर? Fire watcher is a trained and assigned worker appointed in the area where hot work activities such as welding, cutting, grinding, etc. are being carried out. Fire watcher is responsible for accidental fire prevention. उसके बाद बात कर लेते हैं hot work की. A process that can be a source of ignition when flammable material is present. Hot work permit, a document to be completed and approved before performing welding or cutting operations. Job Safety Analysis (JSA), a document which determine, identify and break down potential workplace hazards. What is fire? Fire is a rapid chemical process in which oxygen combines with another substance. Substance may be fuel in the presence of source of heat. Or fire is a process of rapid oxidation at high temperature. This releases hot gases, light on invisible form of radiation energy. This reaction is called combustion. There are three elements. Three elements a fire need to ignite: heat, fuel, and oxygen. What is the principles of fire? Fuel, oxygen, heat. इंटरव्यूअर अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर. क्लास ए, फायर इन्वॉल्व्स सॉलिड. सॉलिड्स कौन से हैं? वुड, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा. क्लास बी, फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, पेंट्स. क्लास सी, फायर इन्वॉल्व्स गैसेस सच एज इथेन, एलपीजी, नेचुरल गैस. क्लास डी, फायर इन्वॉल्व्स मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. क्लास ई, फायर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, electrical wires and equipments. Class K, fire involves kitchen materials such as cooking oil, vegetable oil, etc. इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि क्लास ए के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है. तो क्लास ए के लिए यूज़ किया जाता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसका कलर होता है रेड. क्लास बी के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर, उसका कलर होता है क्रीम. क्लास सी गैस फायर होती है जिसके लिए यूज होता है फॉर्म या डीसीपी. फॉर्म का कलर क्रीम, डीसीपी का कलर ब्लू. क्लास डी मेटल फायर है, उसके लिए यूज होता है डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर और उसका कलर होता है ब्लू. क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर, उसके लिए यूज होता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 का कलर होता है ब्लैक जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है. क्लास के किचन फायर के लिए यूज होता है वेट केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर, उसका कलर होता है येलो. डीसीपी क्या होता है? डीसीपी मींस ड्राई केमिकल पाउडर. इंटरव्यूअर अक्सर आपसे क्वेश्चन कर लेता है व्हाट इज रेस? रेस्क्यू एनी पर्सन, अलार्म टू अलर्ट, कंटेन या कन्फाइन, एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट. पास क्या है? पुल द पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, sweep from side to side. Next question is principle of heat transmission and fire spread. Direct burning by radiation. Radiation क्या होता है? Heat transfer through air. Conduction, heat transfer through medium of solid body. Convection, heat transfer through upward motion of heated matters inside or outside. The main and the more probably question, role and responsibilities as a fire watcher. Before hot work activity, survey the work area and remove or cover any combustible material. To be familiar with portable gas detection, determine the location of fire extinguisher या hose. To have fire extinguisher be readily available and trained during hot work activity. To observe the work being carried out but not close to interfere the work. Should not perform in any other jobs other than fire watch duties. Fire watcher carry out inspection before, during and after hot work activities for potential fire hazards. Sound an alarm if there is an emergency. Ensure that work is stopped
and workplace made safe. Upon completing of hot work, remain at work area from at least 30 minutes to detect any smoldering fire. Inform the supervisor before to departure. Maintain good housekeeping. In case of emergency of fire, stop the work, sound an alarm, use fire extinguisher, call rescue. If the fire is not controlled, then move towards assembly area with authorized person. Count the authorized person, tell situation to rescue team, and wait for further instructions. Causes of fire: electrical equipments, deliberate ignition, hot work, smoking, cooking appliances, heating appliances, unsafe use and storage of flammable liquid and gases, mechanical heat, chemical reactions, consequences of fire, people killed and injured, damage to building and contents including smoke damage, environment damage, preventing fire and fire spread. Control measures to minimize the risk of fire in workplace. Control combustion and flammable material. Control ignition source. Use if electrical equipment in flammable atmosphere. System of work. Good housekeeping. Control of combustible and flammable materials. Eliminate using altogether. Substitute for lower risk. Minimize quantities. Safe use and storage in protected, redacted buildings. Control of combustible and flammable materials should be stored outside. Storage area should be fenced with secure, lockable gate. Warning signs displayed. Ignition source eliminated. Bottle chained upright, separate from other buildings. Empty and full bottles separated. Oxygen bottles are not stored with LPG. Return to store immediate after use. Control of ignition sources: electrical equipment, hot work, smoking, cooking and heating appliances, mechanical heat, deliberate ignition. System of work: remove flammable material from the area, cover item that cannot be removed, sweep the floor, damp down wooden floors, provide suitable fire extinguishers, ensure fire watcher present in the area, check area after work has finished. Good housekeeping: waste free, tidy, well ordered. Storage of flammable liquids. The flash point, the lowest temperature at which liquid can form an ignitable mixture in the air. Have a flash point of greater than 37.77 centigrade and capable of catching fire. Liquids are classified as flammable, highly flammable, extremely flammable. ये इधर इन्होंने टेम्परेचर, उनकी स्टोरेज वगैरह बताई हुई है फ्लेमेबल लिक्विड्स की, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स की, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स की, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है. स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स: यूज़ द मिनिमम वॉल्यूम of liquid required. Liquid should be in properly labeled container. Ideally, the container will be metal with a self-closing lid. Use a metal tray to catch spills and have absorbent material available. Use away from heat and ignition sources. Ensure that workplace is well ventilated. Return कंटेनर्स टू सेफ स्टोरेज आफ्टर यूज़. इसके साथ हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं.